Hello, dear students. Today I am going to start a new chapter, Properties of Triangles. This is chapter number 15, and I think you all are familiar with the name of triangle. So, and also, I think you know the kinds of triangles. On the basis of side, there are three types of triangle: scalene triangle, isosceles triangle, and equilateral triangle. Scalene triangle means no sides are equal, and isosceles triangle means two sides are equal, and equilateral triangle means all sides are equal. And on the basis of angle, there are also three types of triangles: acute angle triangle, right angle triangle, and obtuse angle triangle. Acute angle triangle, a triangle having all angles acute. Acute angle triangle means all angles are acute. This type of triangle is known as acute angle triangle. And right angle, if one angle measures 90 degree, the triangle is called right angle triangle. And if one angle is obtuse, means greater than 90 degree, then the triangle is known as obtuse angle triangle. Thus, there are six types of triangle. Three types are on the basis of sides, and three are on the basis of angle. And I think you have learned it in class 6. So I am going to solve exercise 15a, and going to solve this question. At first, I would like to prove the sum of angles of a triangle. The sum of interior angles of a triangle is 180 degree. Prove that sum of interior angles of a triangle is 180 डिग्री. ये हमको प्रूव करना है कि किसी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है. तो लेट एट फर्स्ट वी विल ड्रा ए ट्रायंगल ABC. ABC and draw a line parallel to BC through A. Suppose this line is XY, X and Y, and this point is A. Let name this angle angle 1, and this angle is 2. Draw XY parallel to BC through A. Angle B equal to angle 1, means this angle is equal to this angle, means angle B equal to angle 1, alternate angles, and angle C equal to angle 2, also alternate angle. And we know
always of 180 डिग्री। कोई भी स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है, मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल ए प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। वी नो एंगल 1 प्लस एंगल ए प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। 1 की जगह हम लोग बी लिख सकते हैं और 2 की जगह सी लिख सकते हैं। देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। आर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। Therefore, the sum of interior angles of a triangle is always 180 degree. Means किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। नो मोर देन 80 डिग्री एंड नो लेस देन 180 डिग्री। न 180 डिग्री से अधिक न उससे कम। Then it is proved. And now I am going to solve some problem of exercise 15A. Read all the questions carefully before going to solve. आप क्वेश्चन अगर सॉल्व करने जाते हैं तो उसके पहले क्वेश्चन को केयरफुली आप अच्छे से पढ़िए। Then I am going to solve question number 1. Question number 1. In triangle ABC, angle A equal to 72 degree and angle B equal to 63 degree. Then find the angle C. Find the value of angle C. We know angle A plus angle B plus angle C is equal to 180. Angle A equal to 72, angle B equal to 63 plus angle C equal to 180. R angle C equal to 180 degree minus 72 plus 63. 180 degree minus 3 to 5 and 7 6 30. 135 degree. 10 minus 5 and 7 minus 3 4. Sorry, here will be 45. So angle C equal to 45. कुछ नहीं करना है, हम जानते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। A और B की वैल्यू रख दीजिए, इन दोनों को ऐड करके 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, एंगल C की वैल्यू आपको पता लग जाएगी। आप क्वेश्चन नंबर 4 भी देख सकते हैं। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेशियो और प्रोपोर्शन का क्वेश्चन लगाए हैं। मैं उस टाइम से बोला था कि अगर जहां आपको रेशियो दिखाई देता है उसको तुरंत एक्स मान लीजिए। तो लिखेंगे लेट द एंगल्स बी, लेट द एंगल्स बी 4x, 3x and 2x. Therefore 4x plus 3x plus 2x is equal to 180 degree. 9x equal to 180 degree. Therefore x equal to 20. x की वैल्यू हमको मिल गई। Therefore 4x equal to 4 into 20 equal to 80 degree. 3x 3 into 20 60 degree
and 2x 2 into 20 degree means 14 और इसका सम अगर करेंगे तो 180 हो जाएगा. So our angles are 80 degree, 60 degree and 40 degree. Now look, question number 8. Each of two equal angles of an isosceles triangle is twice the third angle. Find the angles of the triangle. Read this question very carefully. After that, start solving. पहले क्वेश्चन को आप केयरफुली पढ़ें. क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करें. If each of two angles of an isosceles triangle is twice the third angle, let ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC, therefore angle B equal to angle C, and each equal angle of an isosceles triangle is twice the third angle. जो ये एंगल है B और C, ये थर्ड एंगल के ट्वाइस है. तो let the third angle be X. Let the third angle be X. Third angle be X. Therefore, angle B equal to 2x is equal to angle C, and angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. Or x plus 2x plus 2x is equal to 180 degree. Or 5x is equal to 180 degree. Or x equal to 180 degree upon 5. (32 degree I think. 36 degree. X equal to 36 degree. Therefore, angle B equal to 2x. Means 2 into 36 degree is equal to 70 degree. Also, angle C equal to 2x is equal to 70. And there are some other problems I will solve tomorrow, means in next video, and I think you will solve up to question number 9, 10. And if you have any problem, you may ask me. Thank you.